Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So today we will do exercise of chapter 18 wastewater story. So here question number 1 is fill in the blanks. Cleaning of water is process of removing content contaminants. ओके यहाँ नीचे आप आंसर भी देख सकते हैं. क्लीनिंग ऑफ वाटर इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेंट्स. ओके. सेकेंड, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड सीवेज. है ना, नाली का पानी जो कहते हैं. वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड सीवेज. सी, dried blank is used as manure. So dried dung मतलब जो गोबर होता है ना, is used as manure. Drains get blocked by black and black. तो ड्रेन्स जो होती हैं, नालियाँ जो होती हैं, वो किससे ब्लॉक हो जाती हैं? प्लास्टिक एंड स्लज. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सीवेज? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or sea. Sewage मतलब नालियाँ जो होती हैं ना, वो क्या है? ठीक है, नालों का पानी, नाला जो है ना, और वो कैसे हार्मफुल है. ठीक है. Sewage is a kind of used water or waste water that has been emitted by houses. Sewage क्या है? गंदा पानी है ना, जो कि घर का यूज किया हुआ जो निकलता है ना पानी, है ना, वो है आपका वेस्ट वाटर. नॉट ओनली घर, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स. Okay, sewage is a kind of used water or wastewater that has been emitted by houses, industries, hospitals, offices, and other users. It also features subsurface storage for rainfall. It may contain dangerous chemicals and organisms that can endanger human life. Okay, बहुत सारे dangerous chemicals होते हैं इसमें. Algae can quickly develop when given various nutrients, resulting in a decreased amount of dissolved oxygen in the water. This is why sewage should not be discharged into sea and rivers. जो कचरा जाता है ना, नाली का पानी, वेस्ट वाटर जो जाता है ना, उसी से तो नदियों में काई होती है. ठीक है. Now question number 3, why should oils and fats be not released in the drain? ऑयल और फैट्स को क्यों नहीं हमें ड्रेन में रिलीज करना चाहिए? एक्सप्लेन. ऑयल एंड फैट्स should not be poured down the drain since they are not dissolved in water and float on top of it. हमें इसलिए नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि वो पानी में घुलता नहीं है और ऊपर तैरता रह जाता है. It can clog drains and if released into bodies of water can harm aquatic life. और इससे क्या होता है, और अगर ये पानी जो नालों का पानी है अगर नदियों में चला जाए तो उस पानी से जो जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, है ना, एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है, उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर. So wastewater treatment has physical, chemical and biological processes. First, wastewater is filtered using bar screens to eliminate large materials such as rags, twigs, cans, plastic packets, napkins and so on. Second, water is routed through a grit and sand removal tank. Allowed sand, grit and pebbles to settle. The water is then allowed to settle in a big settling tank where solid phases known as sludge is removed using a scraper. Air is poured into the clarified water to assist aerobic bacteria in growing and consuming waste. And last है, water of this kind is dumped into river or ponds. Okay. Now question number 5. What is sludge? Explain how it is treated. Sludge is a solid waste material that settles in secondary water treatment.
Generally, it is scraped out from the bottom. The clarified water is then discharged. Sludge is stored in a separate tank and treated with anaerobic bacteria, which creates biomass that can be used as biomanure. Okay, now question number 6. Untreated human excreta is a health hazard. Explain. So, millions of bacteria live in the human stomach and expel with the feces. If human excreta is dumped directly into the soil or water, it can pollute both the water and the soil. Under favorable conditions, the bacteria divided and multiply. And when the water reaches the earth table, it might affect a bigger population that consumes it. It can induce waterborne diseases such as typhoid and cholera. Okay, now question number 7. Name two chemicals used to disinfect water. यहाँ पर बैक्टीरिया के अलावा ह्यूमन एक्सक्रीटा की बात की गई है, मतलब ह्यूमन लोगों का जो मल होता है ना इंसानों का, वो अगर डायरेक्ट पानी में चला जाएगा तो पानी और मिट्टी दोनों पॉल्यूटेड होगी। उससे क्या होता है, टाइफाइड और कोलेरा जैसी बीमारियां होती हैं, वो पानी अगर यूज किया जाएगा फिर बाद में, तो है ना। Name two chemicals used to disinfect water. So water disinfection involves removing or deactivating pathogenic bacteria as well as killing them. Microorganisms are rendered inactive, putting an end to their development and reproduction. If germs are not removed from drinking water, humans will develop unwell from drinking water. Chlorine and ozone are the two chemicals used in water disinfection. Okay, now question number 8. Explain the function of bar screens in a wastewater treatment plant. So the answer is, when wastewater is pumped through bar screens, it serves as a large screen. In the first step of cleaning water, large materials such as rags, twigs, cans, plastics and napkins are removed. यहाँ पर वाटर क्लीन करने के लिए बताया गया है कि अगर नाली का पानी आपको साफ करना है तो सबसे पहले रैग, ट्विग, जितने भी उसमें प्लास्टिक, कैन, धागे वगैरह पड़े होते हैं, नैपकिन वगैरह पड़ी होती हैं, उन सबको रिमूव करना होता है। ठीक है, तब हम वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन के माध्यम से पंप कर सकते हैं, है ना, और उसे फिर सफाई किया जा सकता है उस वाटर का। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिसीज. Sanitation is a public health issue. Sanitation includes the prevention of disease, the provision of safe drinking water, and the proper disposal of garbage. Diseases are spread when cleanliness standards are not met. Dirty water serves as a breeding ground for mosquitoes that transmit diseases. Improper sewage disposal can result in waterborne sickness. As a result, sanitation is the utmost pathogen rescue and can result in a disease-free environment. Okay. Now, question number 10. Outline your role as an active citizen in relation to sanitation. All humans have responsibility to play in keeping our environment clean. As engaged and knowledgeable citizens, we can begin from home. Adopting excellent sanitation techniques should be a way of life for all of us. Our energy, ideas, and excitement can have an impact on others and encourage people to maintain a healthy living environment for the benefit of society. Now यहाँ पर देखें आपको क्या दिया हुआ है, क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट, तो यहाँ पर फिर ये फिल किया गया है ना, ये दिया हुआ है, ये देखिए, तो ये आपको फिल करना है। ओके, ये देखिए, ये देख लीजिए एक बार और इसे आप लोग अपनी कॉपी में फिल कर लीजिएगा, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इसमें राइट टू लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन दिए होते हैं, वन वर्ड सेंटेंस ऊपर दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें यहाँ फिल करने होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए और फिल कर लीजिएगा, और उसके आंसर भी ये दिए हैं, ये देखिए, ये across liquid waste product, sewage, solid waste extracted in sewage treatment, sludge, a word related to hygiene, sanitation, waste matter,
waste matter discharged from human body excreta, used water, wastewater, a pipe carrying sewage, sewer, microorganism which cause cholera, bacteria, a chemical to disinfect water, ozone. ठीक है, ये दिया हुआ है. Now question number 12. Study the following statements about ozone. It is essential for the breathing of living organisms. It is used to disinfect water. It absorbs ultraviolet rays. Its proportion in the air is about 3%. ये आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं कि A, B, C तीनों सही है, B एंड C राइट है, A एंड D राइट है या ऑल राइट है. तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड, B एंड C. ओके, इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर. इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, ओजोन जो है. ओके, तो यहाँ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. ओके, सो राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी.